ये ओह! ऐसे था कि इतने सालों से वी हैव बीन अटेंडिंग डिफरेंट इवेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जाते हैं तो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स अलग होती है, वीजा फाइल करने से लेके यहाँ समोसा कहाँ मिलेगा ये सब हमें नहीं पता होता। तो ये एक्सक्लूजन मॉडल नहीं है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू आइडेंटिफाई विथ दोज आइडियाज और मॉडल्स, यू आर अ भाई। या तो एग्जैक्टली। आई और इट डज नॉट create caste, gender, religion, community. There is no differentiating. That the way I see it, right? तो ये मेरा फलसफा है। मेरे नजरिए से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये लगता है यही ब्यूटी होती है Web3 कम्युनिटीज की, that it can go from nothing to something completely unexpected. तो ये अगर सोच है आपकी और आपके पास आइडिया है तो Web3 आपको चारों हाथों से इनवाइट करता है। कम हियर, बिल्ड समथिंग, क्रिएट समथिंग, पार्टिसिपेट एंड डू समथिंग मीनिंगफुल। मेरा ये थिंकिंग है कि पहले दिन से डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, द काइंड ऑफ रिस्क एपेटाइट यू हैव। दीज आर टू मेजर डिफाइनिंग फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी लाइफस्टाइल डिफाइन होगी ये चॉइस से, और आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना चाहिए उसके लिए, सपोर्ट करने के लिए। इफ दैट सिटी रेंट initially becomes very like later on it picks up when इट्स अ people बिगर have बिगर IPO'd and बैरियर। stuff. Yeah. So initial stage में आपने ना चालू करते हैं, and then I just realized कि यार I always thought कि આપણે bias ન હોવું જોઈએ ગુજરાતી તરફ. આપણે કેમ just because I'm a Gujarati I should not say let's do this in Gujarat and stuff. But then I just realized that maybe it's value alignment or it's something that I can understand that it is the right place to do it. Creation of that tribe is super important. If you don't have that, creating that will save you from so many pitfalls. Hanging out, going to events with 500 people, everyone is my friend, everyone is my Twitter friend. That's complete. Don't believe in all these things. The whole world is not family and stuff. You need that core people who will not over, even if it is in their uh, profitable interest to do that. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड में डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ है परीन। परीन के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहूंगा कम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल काम करते हैं। और सबसे ज्यादा जो वैल्यू Web3 में क्रिएट होती है वो है कम्युनिटी से। एंड ही इज बीन ओजी इन बिल्डिंग कम्युनिटीज। बहुत सारी कम्युनिटीज उन्होंने बिल्ड की है। लेटेस्ट बीइंग बहुत ही वायरल है अगर आप ट्विटर पर हो, Web3 इंडिया के लिए खास करके, भाई कबाल। सो दैट आइडिया जर्मिनेटेड फ्रॉम हिम। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन लॉन्चिंग दैट आइडिया। और आज उस आइडिया के साथ कम्युनिटी में लगभग 50 लोग जुड़ गए हैं। एंड एवरी वन इज वर्किंग ऑन इट। तो ये बहुत ही कमाल चीज है Web3 की दुनिया की, कि क्रिएट कहाँ से होता है और उसका फिर क्या शेप होता है, फॉर्म होता है, किसी को पता नहीं होता। तो इसी नोट पर वेलकम टू द शो परेन, हाउ आर यू टुडे? Good, yeah. Thank you for having me. आपको अपना इंट्रोडक्शन पसंद आया? हाँ, आई डोंट थिंक इससे बेटर डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्चुअली। दिस इज दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजों को साथ में लाना। आई थिंक दैट्स एज इजी एज इट गेट्स। और हाँ, सारा एक्चुअली सारे जो मेरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं सारे इसी लाइंस पे रहे हैं, इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सक्सेस। सो या हाँ। यार, सो सबसे पहला क्वेश्चन, लाइक बिफोर वी गेट इनटू योर जर्नी, ये भाई कबाल का आइडिया आपको आया कहाँ से? अरे बाप रे, हम भाई कबाल का पॉडकास्ट कर रहे हैं। भाई कबाल का आइडिया एक्चुअली ऐसा था कि आइडिया पता नहीं था कि हमें अभी जो बन गया है वो बनने वाला है। तो ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि नाउ देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप, अभी एक पॉडकास्ट है, अभी काफ़ी और इनिशिएटिव्स उसके चल रहे हैं। तो ये ओह। सारा करना था, ऐसा कोई आइडिया नहीं था मेरे दिमाग में या किसी के भी दिमाग में। ये ओह। ऐसे था कि इतने सालों से वी हैव बीन अटेंडिंग डिफरेंट इवेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जाते हैं तो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स अलग होती है, वीज़ा फाइल करने से लेके यहाँ समोसा कहाँ मिलेगा ये सब हमें नहीं पता होता। सो आई बीन जनरली मीटिंग हैंग आउट विद लॉट ऑफ इंडियन पीपल जो उस कंट्री में रहते हैं, कहीं अलग अलग जगह पर। इंडिया में तो हम करते ही रहते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ। तो लोगों से ऐसे ही बातें हो रही थी काफ़ी टाइम से कि वी शुड डू समथिंग टुगेदर, क्या कर रहे हो। काफ़ी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर। आई नो एटलीस्ट 6-7 लोगों ने अलग अलग जीट्स डाओ ये वो सब कम्युनिटीज चालू की थी, अभी भी चल रही है काफ़ी सारी, और लोग कर रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें कभी एकदम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे नहीं आई थी कि हाँ बस अब इसको प्रॉपर करते हैं।
So that I think happened with this Bhai Kabal because uh, 7-8 लोग हैं जो अभी काफी टाइम से बहुत हेविली काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं सबसे कम काम कर रहा हूँ इसमें बट देन ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपस में या मेरे साथ या किसी ना किसी के साथ ये बात की है दैट वी नीड दिस कम्युनिटी। वैसे चाइनीज कबाल इज अ रियल थिंग, राइट? दैट इज अ रियल कबाल, राइट? ये बहुत हाँ पॉलिटिकली इनकरेक्ट है बट ये इसको ऑपरेशन में देखा है लोगों ने ऐसे। इट्स नॉट इवन अबाउट रीजनैलिटी कि हमें बाकी सबको एक्सक्लूड करना है, बट द फैक्ट कि हमारे प्रॉब्लम बहुत अलग है। हम्म, आ, और हमको इजी होता है समझाना ऐसे, अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे तो, राइट? तो वाई नॉट कनेक्ट, क्योंकि हमारे हम्म, वैल्यूज ऑलरेडी अलाइन हो रहे हैं, हमने हम्म, हमारा कल्चरल अपब्रिंगिंग से हो रहे हैं, राइट? हम्म, एंड इसमें काफी सारे लोग हैं जो अब आ गए हैं जो यूएस से हैं, पीपल हु आर नॉट इवन इंडियन, सारे टाइप के लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं बिकॉज दे एसोसिएटेड द वर्ड वाइब विद अ हम्म, फीलिंग। सो व्हाट हम्म, हैज हैपेंड नाउ इज कि काफी लोगों ने सब ये सोच रहे थे ऑलरेडी, मन में था। आई थिंक हम्म, स्मोकी द बैरा ने ट्वीट भी किया है काफी टाइम, लोग काफी चीजें कर रहे हैं बट ये आइडिया नहीं था। एक दिन हम ऐसे ही उठे, 6 of us, एंड वी सेड कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें कुछ तो लॉन्च करना है। तो आज रात को 2-3 बजे समथिंग वी वांट टू डू, तो हम्म, व्हाट, ना ये आइडिया है मेरे दिमाग में, कर लो। तो 6-7 पीपल ऑन कॉल हैपेंड एंड सीधा सीधा जाके अपॉइंटमेंट किया। हमें इसको स्पेकुलेशन नहीं बनाना था, इसलिए हमने बोला पम्प डॉट फंडिंग वर्चुअल करते हैं, क्योंकि उसका हम्म, मार्केट कैप रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो स्पेकुलेशन कम होगा। हम्म, एंड वी जस्ट डिड इट। हमने कुछ $100 डाले और हम सब भूल गए 3-4 दिन, किसी को कुछ याद नहीं था। ठीक है, हो गया, कुछ तो हुआ, देखते हैं क्या होता है। फिर आई थिंक 2-3 ट्वीट वायरल हो गई। एक गौरांग की ट्वीट वायरल हुई, कुणाल की ट्वीट वायरल हुई, एंड देन इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अरे हमने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है और ये हो रहा है। सो पीपल एक्चुअली इन ऑन देयर ओन स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, और सब लोग आने लग गए हैं कि uh, अरे मैं ये करना चाहता हूँ, मैं लोगो बनाना चाहता हम्म, हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, लोगो बनाना। क्यों कर रहे हो भाई, क्या हो रहा है ये? देयर इज नथिंग। सो पीपल बॉट देयर स्किन इन द गेम विद देयर मनी एंड विद देयर हम्म, एफर्ट टाइम, वट एवर स्किल दे हैव। सो हम्म, ऐसे ही वो पूरा ब्लो अप हो गया कि अब सबको पता है कि हम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी तो बढ़ने ही वाली है। तो इफ यू आर बुलिश ऑन इट देन यू नो यू कीप डूइंग दैट। सो ऐसे हम्म। हो गया है अभी। अभी देखते हैं, अभी भी आई कांट से दैट वी नो व्हाट इट इज और हाउ इट इज गोइंग टू बी एंड स्टफ लाइक दैट, बट देयर आर more than 50 people figuring these things out on their own, in their own way, like they're just doing it, right? और अपने अपने अलग अलग चीजें, इनिशिएटिव वो हमारे पास लाते हैं, और 7-8 लोग हैं जो एकदम कोर है, एंड दीज गाइज आर ऑलमोस्ट एक्चुअली वर्किंग फुल टाइम। जो 5-6 तो कोर लोग हैं वो बहुत टाइम दे रहे हैं प्रोजेक्ट को। मैं सबसे 20 टाइम दे रहा हूँ ये प्रोजेक्ट को अभी के लिए। बट आई थिंक इट्स स्टार्टेड, थोड़ा स्नोबॉल ऐसा हो गया है कि इट्स इवन वेरी हार्ड टू स्टॉप। अभी इसको ले जाना पड़ेगा जहां भी इसकी डेस्टिनी है वहां। यार बरिन, आई टेल यू टू थिंग्स जो बहुत उभर के सामने आई है मेरे लिए। सो सबसे पहली चीज, ये एक्सक्लूजन मॉडल नहीं है। ये एक्चुअली द वे यू डिस्क्राइब इट, इट वाज एन इंक्लूजन मॉडल, कोऑर्डिनेशन करने के लिए कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स सिमिलर है, हमारे चैलेंजेस सिमिलर है, हमारे शायद अपॉर्चुनिटीज सिमिलर ना हो, लेकिन अगर वो चैलेंजेस को अगर एक साथ कहीं पर दिशा मिलती है, एड्रेस करने का मौका मिलता है, तो उससे क्या है कि गति मिलती है, वी गेट लॉट ऑफ स्केलिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो अ ब्रिलियंट आइडिया। यार ये एक और चीज है कि वी गॉट अ लॉट ऑफ हेट ऑन ट्विटर एज वेल। बहुत बहुत हम्म, हेट मिला, एक्सट्रीम। इतना मेरी लाइफ में तो मैंने कभी नहीं देखा अभी तक कि रोज सुबह उठ रहे हैं और एक हेट ट्वीट आ रहा है, राइट? और बड़े बड़े लोगों से भी आ रहा है। तो अ, हमारा आइडिया ये नहीं है कि किसी को नीचे गिराना, राइट? ऐसा हम्म, नहीं है कि कुछ भाई कोई रेस है या जेंडर है या कुछ है। अभी हमारा पॉडकास्ट एपिसोड निकला कल विद जेम्स यंग, राइट? ही हम्म, इज एन अमेरिकन गाय हु इज अ भाई, मतलब उसमें वो फीलिंग है यार भाई वाली। तो हम हम्म, ये सब हमने नैरेटिव नहीं सोचा अभी तक, हमारी वेबसाइट नहीं है, हमने कहीं कुछ लिखा नहीं है, कहीं डाला नहीं है इस, हम्म, बिकॉज वी डेंट स्टार्ट दिस विद सेइंग कि इसको BAYC बनाएंगे या इसको हम इस टाइप का FWB बनाएंगे या हम ऐसा कैसे करेंगे। नहीं है, कम्युनिटी हैज टू बी ऑन वैल्यू अलाइनमेंट।
तो जो जिसके साथ ज्यादा वैल्यू अलाइनमेंट है उसके साथ ज्यादा कोहेजन होगा ही होगा, हम्म, आइडेंटिफाई ज्यादा होगा। किसी के साथ कम होगा, वो होगा, हम्म, बट नॉट, वी आर नॉट सेइंग कि आप मत आओ। इनफैक्ट हम्म, अभी के लिए वी हैव 5 मीटअप्स हैपनिंग इन 5 कंट्रीज, और वो खुद हम्म, कर रहे हैं लोग। आई थिंक जापान वापान में भी भाई इवेंट होने वाला है। तो हम्म, इट्स नॉट टू से कि कोई भी मत आओ, इट्स टू से कि इस फीलिंग को डिफाइन कर लेते हैं अभी। अभी अब तक हमने डिफाइन नहीं की है ये फीलिंग, तो हम एक्चुअली अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इसको डिफाइन करना है। एक वाइट पेपर पे एक छोटी टीम काम कर रही है। दे केम अप विद दिस आइडिया, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू जस्ट डिफाइन व्हाट दिस इज इवेंचुअली। अभी हम्म। के लिए सब uh, जो जिसको जो समझना है सब समझ रहे हैं अपने अपने हिसाब से। नहीं, like you know, it's also I think it's very important. यहाँ पर मेरा my point of view is very simple and clear. It's an inclusion model, community to provide a belongingness, right? तो ये exclusion model नहीं है from my point of view. Uh, if you identify with those ideas or models, you are a bhai. या तो एग्जैक्टली। आई मीन, और it does not create caste, gender, religion, community. There is no differentiating. That the way I see it, right? तो ये मेरा मेरा फलसफा है, मेरे नजरिए से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये लगता है। और the more I think it is very important to keep on harping the simple objective, because narrative कई बार क्या होता है कि ट्विस्ट कर दिया जाता है। बट इफ द आइडिया इज सिंपल, आई डोंट नो व्हाट योर आइडिया वाज, बट बेस्ड ऑन हमारी जो बातचीत हुई है और मेरी समझ, मुझे ये कहती है कि मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये इंक्लूजन मॉडल है फॉर एनीवन आइडेंटिफाइंग विद दोज वैल्यूज। चांसेस आर कि एग्जैक्टली। ये इंडियन कम्युनिटी ज्यादा आइडेंटिफाई करेगी, बट नॉट नेसेसरी कि ये इंडियन कम्युनिटी ही करेगी, कोई और भी कर सकता है। तो उनके लिए भी खुला है। वी विल बी तो आई थिंक, सरप्राइज आई थिंक। हमें हमें सरप्राइज होगा अभी के लिए, जितने जितने डीएम्स आ रहे हैं और जितनी बातें हो रही है ना। हाँ, आई थिंक the feeling is not just Indian or not just gender based or anything. The feeling is actually pretty insane. कभी कभी ऐसे रास्ते पे कोई मिलके बोलता है, अरे भाई, अरे अरे ये कैसे हो गया, एंड पीपल हु डोंट इवन स्पीक हिंदी ऑल्सो, राइट, बिकॉज टेक्निकली भाई इज हिंदी। तो ऐसे सब ऑब्जेक्शंस काफी सारे हैं, बट वो ट्रांसेंड हो जाएगा। आई थिंक दैट्स बिकम आवर जॉब कि अब इसको ट्रांसेंड करा दो ये सब बाउंड्रीज से। इट्स ब्रो, ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, भाई क्या कर रहा है? या तो एग्जैक्टली आई डोंट एग्जैक्टली। सी एनी डिफरेंस। तो एंड एंड आई थिंक, और मुझे ये लगता है कि दूसरी बात पर मैं जाने से पहले आपको ये बता दूं कि आपने अ, ये जो आइडिएट आपने कर दिया है, राइट? तो देर विल बी लॉट ऑफ ब्रिक बैक्स कमिंग। आई इफ मैं नहीं पता आप कैसे हैंडल करते हो, बट मेरा फलसफा यही है कि इट्स इनडिफरेंट, राइट? वी आर फोकसिंग, जब तक आपकी जो बात मुझे समझ में आएगी तो, बिकॉज दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी, एंगेजमेंट। तो वो एंगेज ही नहीं करना, बिकॉज इट हैव टू बी इनडिफरेंट। वी गॉट लॉट ऑफ ब्रिक बैट्स, जहाँ जहाँ जेन्युइन इंटेंशन किसी का था हमने रिप्लाई कर दिया कि ठीक है देखो हम्म, ये है। कहीं कहीं लोग ज्यादा ही हेट में या ज्यादा ही सार्काज्म में कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने हम्म, एक वीडियो डाला था, ये टाइम है, गुरु भाई का वीडियो है वो मूवी का, जिसमें वो डायलॉग है, जब तुम्हारे खिलाफ लोग बोलने लग जाए समझो तरक्की कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज लाइक इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि कुछ तो आने ही वाला है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। काफी लोगों ने बोल दिया कॉइन नहीं लॉन्च करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सब। आप विफ खरीद रहे हो, आप हमें बोल रहे हो कॉइन मत लॉन्च करो, और कोई बोल रहा है आप ये कम्युनिटी चला रहे हो। सब कम्युनिटी एक्सक्लूसिव ही है एनीवे। आप बीएवाईसी को नहीं बोल सकते कि आप इंक्लूसिव हो जाओ। आप हमें बोल रहे हो क्योंकि हम आपकी सुन रहे हैं और हम आपके भाई हैं ना, तो हम सुन लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट हमें जो करना है हम तरक्की करते ही रहेंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू और स्टॉप। और मजे की बात क्या है परी, कि लाइक आई टर्न इट completely around its head। जो एक्सक्लूसिव मॉडल है वो एक्सक्लूसिव मॉडल नहीं है, वो हर कोई मॉडल इंक्लूसिव है। इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट, हाउ विलिंग आर यू टू पार्टिसिपेट इन दैट। अब जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, बैरियर बढ़ते जाएंगे, राइट? इट कुड बी प्राइस बैरियर, इट कुड बी सोशल बैरियर, इट कुड बी पावर बैरियर, इट कुड बी एंडलेस टाइप ऑफ बैरियर्स, राइट? वो कुदरत है।
तो वो कुदरत का निजाम है, तो वहां किसी की नहीं चलती है। तो आई थिंक यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बहुत ही बढ़िया ये। थैंक यू। मैं भाई मूवमेंट देख रहा हूँ तो, एंड आई डोंट नो इफ एनी विच वे, इफ आई कैन कंट्रीब्यूट इन माय स्मॉल वे, आई वुड लव टू। तो ये पॉइंट वन था। पॉइंट टू एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट फोकस पॉइंट वन, वो नैरेटिव और बातें इतनी बढ़ जाती है कि फोकस हट जाता है। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज, इट क्रिएट्स, एज यू राइटली सेड राइट, और हमारे पॉडकास्ट सुनने वाले कई लोग वेब 3 में पेरिफेरी पे है या जस्ट एंटर हो रहे हैं। तो उनके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि व्हेन यू व्हेन कम्युनिटी इज क्रिएटेड, इन माय व्यू अगेन पर्सनली स्पीकिंग, इट्स लाइक एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो कैसे फैलता है, कैसे बढ़ता है, वो फाउंडर, क्रिएटर, आइडिएटर के पास भी उसका सोच नहीं होता है। और कुछ नहीं यही होता। ब्यूटी होती है वेब 3 कम्युनिटीज की, that it can go from nothing to something completely unexpected। तो ये अगर सोच है आपकी और आपके पास आइडिया है, तो वेब 3 आपको चारों हाथों से इनवाइट करता है, कम हियर, बिल्ड समथिंग, क्रिएट समथिंग, पार्टिसिपेट एंड डू समथिंग मीनिंगफुल, राइट। तो ये हमारा फलसफा है। हम यही बांटते, फिर आपकी मर्जी होती है। 100%। तो परिन, चलिए अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, और गो बैक टू योर फाउंडेशन। तो आप कहाँ पले बड़े, कहाँ पैदा हुए? तो बॉम्बे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे। 28 साल वहीं पर मैक्सिमम लाइफ। उसके बाद मैं थोड़े टाइम रहा गोवा, 5 साढ़े 5 साल। फिर बैंगलोर मोस्टली, बीच में छोटा स्टिंट दुबई SF। बट मोस्टली ये 3 सिटीज में रहा हूँ मैं अभी तक तो। अब अहमदाबाद है। और पढ़ाई कहाँ की, स्कूलिंग कहाँ की, कॉलेज? सब सब बॉम्बे में। बॉम्बे कौन सी कॉलेज में में? स्कूलिंग कॉलेज बॉम्बे में मैंने रहेजा कॉलेज है एक, वहाँ से BMS होता है, बिजनेस BBA इक्विवेलेंट। बेसिकली हम्म, मैंने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब बिजनेस में किया है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। कोडिंग मैंने सीखी थी क्योंकि यू नो मज़ा आ रहा था वेबसाइट हम्म, बनाने में, ऐप बनाने में एंड स्टफ लाइक दैट। कंप्यूटर्स असेंबल करते थे हम फ्रेंड्स हम्म, व्रेंड्स मिलके बहुत पहले। तो हम्म, आई नेवर बिकेम एन इंजीनियर एज सच, बट हम्म। टेक में पहले से बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है कि यार देखते क्या होता है इसको करके। और ये कौन से साल की बात है? व्हेन डिड यू फिनिश योर यूनिवर्सिटी, राय जैसे? तो 2009, या 2009 में मैंने MBA कंप्लीट किया, रह जैसे 2006। ओके। तो आई थिंक लाइक इट्स अमेजिंग। आपने अगर किताब पढ़ी हो, आउटलायर्स, माइकल, सॉरी, माल्कम ग्लैडवेल की है, तो बहुत ही हम्म, बेहतरीन किताब है। तो उसमें एक चीज है कि ही रिलेट्स टू ऑल द रेवोल्यूशंस, राइट। तो हम ये सोचते होते हैं कि वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द, सब कुछ कर सकते हैं, बट राइट जगह पर पैदा होना, राइट समय में पैदा होना, राइट जगह से कॉलेज पास करना। तो ये मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जैसे पता है, हमारे हमने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, राइट। तो जो की फाउंडर्स, की कंट्रीब्यूटर्स है, राइट, दे ऑल केम इन टू रियल वर्ल्ड बिटवीन 2007 एंड 2015। तो वो मैं उससे थोड़ा पीछे था, राइट। और इसके बाद तो वो जो जोन है ना, वो जो टाइम होता है, वो जो उम्र होती है, वो लोगों को वो एक्सेस बहुत ज्यादा था, क्योंकि लाइफ इज ऑन योर साइड। दैट्स हाउ आई से इट। तो ये मेरा नजरिया है। तो आई आप, आई लाइक टू कनेक्ट रैंडम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड फॉर्म अ पैटर्न। आपने जो बोला, दैट्स द टाइम फ्रेम इज प्रीटी एक्यूरेट। क्योंकि आप देखोगे तो 2007 में आई थिंक पॉल ग्राम ने लिखना प्रॉपरली चालू किया। आई थिंक दैट्स, इट्स अंडर एस्टिमेटेड कि उसका कितना इम्पैक्ट रहा है इवन इंडिया में। क्योंकि तब किसी को समझ नहीं आता था, 2009-10 में हम सब सोशल नेटवर्क देख लेते थे। आप अगर उस टाइम के फाउंडर्स को पूछोगे ना कि आप क्यों सॉफ्टवेयर बना रहे हो या आप क्यों टेक पे काम कर रहे हो,
तो देयर हम्म, विल बी टू आंसर्स, वन इज सोशल नेटवर्क देखी, अब मुझे भी मार्क जकरबर्ग बनना है। हम्म, सेकंड वाज पॉल ग्राम का ऐसे पढ़ा वाईसी में, देखा कि क्या चल रहा है एंड आई वांट टू गो हम्म, देयर। हम्म, दोज वर एक्चुअली प्रीटी बिग मोटिवेशंस एंड उस टाइम आई थिंक देयर वाज लिटरली नो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, वेरी रेयर टू फाइंड डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की इनोवेशन कैसे मैनेज होता है। कोई ऐसे अभी जैसे प्रिंटिंग प्रेस को लोग स्टडी करते हैं, वैसे उतना कुछ था नहीं था, लाइक रियल फैक्ट्स को कोई नहीं पता था, तो पॉल ग्राम डिस्टिल करके उसको देते जा रहे हैं। पीटर थीम की बुक आ रही है, सो यू ऑलवेज रीड दैट एंड हम्म, लॉट ऑफ अदर पीपल दैट आर नॉट वेरी पॉपुलर आयरॉनिकली राइट नाउ, बट काफी सारे लोगों ने ये सब रेवोल्यूशन तभी चालू किया वहां पर सैन फ्रांसिस्को में, राइट? एंड Y Combinator at the center of all of these हम्म, things brought हम्म, about ये कोई भी कर सकता है इसको। वाह, मैं इंडिया के गांव से खड़ा होके अगर मैंने अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं डायरेक्ट वाईसी जा सकता हूँ, विच इज हम्म, जस्ट इनसेन। तो ये हम्म, पहले कभी एक्सेस नहीं था मुंबई में। आई वेंट टू 5 इंक्यूबेटर्स जब मैं SaaS प्रोडक्ट, वेब टू प्रोडक्ट बना रहा था 2012 से 2015 में, राइट? और वो इंक्यूबेटर मतलब ठीक है, जो सिखा दो सीख लेंगे यार हम, क्योंकि कुछ भी नहीं आता। सो यू डोंट नो बिकॉज टेक स्टार्टअप माइंडसेट इज वेरी ऑपोजिट टू धंधा माइंडसेट, एंड मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम धंधा माइंडसेट, राइट? सबको बस ये करना है, वो करना है, लाइक मैनेज इट, लीनियर चीजें चाहिए। वेराज वैसे सिलिकॉन वैली तो नहीं बनती। सिलिकॉन वैली अगर आपको फेसबुक या एप्पल बनाना है तो आपको फिर एक्सपोनेंशियल थिंकिंग रखनी पड़ेगी, पावर लॉस समझना पड़ेगा। देन द गेम इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, सारा ट्रेडिशनल ज्ञान खिड़की के बाहर है, एंड दैट्स व्हाई वी सी वेब टू इंडिया में कुछ भी आया नहीं है ढंग का अभी तक, फ्रेंकली स्पीकिंग। बहुत कम कुछ भी ऐसा रिस्पेक्टेबल कॉपी चीजें हैं। पेस्ट मॉडल नहीं चलते सिर्फ। हाँ, बिकॉज दे फेस द हार्डेस्ट टाइम, सो आई कैन अंडरस्टैंड। हम्म, लाइक मैं, मेरे स्टार्टअप में मेरी ऑफिस थी पेटीएम के ऑफिस में, मुंबई में। विजय शेखर शर्मा यूज टू रोम अराउंड एंड सो, एंड काफी सारे वीसीज वहां बैठते थे उस टाइम पे, तो हम देखते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आई वाज जस्ट लाइक वेरी यंग एंड नाइव, जस्ट अब्जॉर्बिंग थिंग्स, बट एट सम पॉइंट वी कुड सी के यार अभी के फाउंडर की लाइफ इज सो मच इजियर देन दैट फाउंडर लाइफ। उनको तो मतलब वाह, द डील्स, दैट काइंड ऑफ टर्म्स दैट वीसीज ऑफर्ड, मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं थी स्टार्टअप क्या है, किसी को पता ही नहीं था ये सब चीजें। तो आई थिंक अगर ऑडियंस में किसी ने टीवीएफ पिक्चर्स नहीं देखा है तो देख लेना यार, यू विल सी एक्चुअली दैट्स ट्रूथ व्हाट यूज्ड टू हैपन लाइक 15 हम्म। years ago. So, you very well said it. Most people they think of business, यानी जिसे हम कहते हैं धंधा है, राइट? तो धंधा और उसका धंधा करना इज ओनली फोकसिंग ऑन रिवॉर्ड आउटकम। और स्टार्टअप इन माय ओपिनियन अगेन लाइक इज मोर ड्रिवन ऑन वैल्यू क्रिएशन, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन becomes more power driving factor in a startup than reward extracting नहीं mindset, नहीं right? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो एस्टैब सॉरी। सॉरी, ये मतलब कि ये क्या है पता है, हम इसको सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में देख रहे हैं और सब लोग देखते हैं। हम्म, अभी मैं अहमदाबाद हम्म, में फाउंडर्स के साथ हैंग आउट करता हूँ, दे हेट वीसीज, राइट? उनको ये सारे लॉस कर रहा है तो क्यों मैं इसका स्टॉक खरीदूं एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? और दूसरी साइड में ये है कि जो बैंगलोर में वीसी ड्रिवन स्टार्टअप्स है उनको बूटस्ट्रैप का कुछ भी, दे हैव नो क्लू, राइट? बट हम्म, the frame to look at this is not monetary. Monetary is very easy to define कि 100 billion Facebook or 1 billion 2 billion Zoho or some stuff like that, पर वैसा नहीं है। The frame to think about it is कि आप टेक स्टैक में कहाँ हो, कितने नीचे हो, राइट? विच मीन्स एक नई कंट्री बना रहे हो आप तो सबसे पहले रेलवे बना रहे हो, राइट? सो द पर्सन लेइंग दोज रेलवे ट्रैक्स इज व्हाट फैंग स्टार्टअप लुक्स लाइक। आप ट्रैक बना हम्म, रहे हो यहाँ पर, राइट? हम्म, इसीलिए एप्पल इतना बड़ा है यार, कोई भी गूगल इतना बड़ा है, क्योंकि उन्होंने ये कोई तो की टेक कंपोनेंट का रेलवे लाइन बनाया है, राइट? फिर उसके रेलवे लाइन के ऊपर डब्बे बनाने वाले आएंगे, डब्बे बनाने वाले के ऊपर चाय बेचने वाले आएंगे, सीट बनाने हम्म, वाले आएंगे अंदर, मूंगफली बेचने वाले आएंगे ट्रेन के अंदर, ये सब होगा। तो इफ यू लुक एट द कॉमन पर्सन जो अब बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस जिसको बोलते हैं इंडिया में, राइट?
तो वो लेट्स से कपड़े की दुकान डाल दी उसने, अच्छी चल रही है, हम्म, अच्छा पैसा कमा रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट? बट ये हम्म, ट्रेन के अंदर चाय बेचने वाला आदमी है, राइट? नॉट टू हम्म। डिमीन, लाइक चाय वाला इज ऑलवेज ऑसम, बट ये not ये to say this, right? But at certain extent आपको एकदम रेलवे लाइन बनानी है, जो इंडिया में लेट्स से पोस्टमैन ने काफी ट्राई की, हम्म, अभी यू नो एट सम लेवल पॉलीगॉन ने एक रेलवे लाइन बनाई है, लाइक दैट्स हम्म, डिफरेंट लेवल फीट दैट वी हैव टू थिंक अबाउट, एंड वो हम्म। चीज वीसी के मनी के बिना बनना बहुत बहुत मुश्किल है, लाइक हाँ, इनक्रेडिबली नहीं बन एक्सपेंसिव सके। टू डू तो यू आई थिंक आई वाज एग्जैक्टली ट्राइंग टू से द दैट। सेम थिंग। तो मैं जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस इन माय व्यू इज अ वेरी, लाइक नॉट फ्रॉम एन इकोनॉमी और फाइनेंशियल टर्म्स, राइट? वो एक मॉडल है जो सीमित है, राइट? वैल्यू क्रिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो इट्स हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ये हर जगह फैलती है। तो when generally, right, most of the startups which has got some legs to do something, they are focusing knowingly, unknowingly, consciously, subconsciously on value creation, और वही या स्केल होती है। हालांकि या बिजनेस So बिजनेस जो large मॉडल है, scale value creation is what you were talking about, not या like dollar. I understood नो that नो, as dollar. Yeah. और बिजनेस का जो मॉडल होता है वो वेरी क्लीशे, क्लियर कट डिफाइंड होता है कि मैंने ये दुकान डाल दी है तो मुझे इतना धंधा करना है इतना करना टू है, सर्वाइव। हाँ। सो और ये धंधे के हाँ। ऊपर मेरा मार्जिन ये होगा, तो इट इज वेरी हम्म, डिफाइंड। तो देन यू कैन डू हम्म, बिजनेस, बट yeah, एज यू आर सेइंग स्टार्टअप, ये फलसफा, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा आम होता है कि हम आपस में बात करते हैं तो ये आइडिएट करना इजी हो जाता है। बट एनी वन एल्स आउटसाइड, राइट? तो उनके साथ ये बात, भाई पैसे कैसे कमाओगे, पैसे का रिटर्न क्या? मैंने बोला पैसे नहीं चाहिए, तो बोला पैसे के बिना कैसे कर रहे हो तुम, क्या करोगे कैसे? तो ये जो चैलेंजेस है, एंड व्हाई आई ब्रिंग इट अप एंड आई एम स्पेंडिंग एक्चुअली some time on it, is because we both are able to guide youngsters. Okay, if you are thinking on value creation, that's the idea. Don't narrow your focus, because that's how you build something amazing, right? जरूरी नहीं है कि आप पहले शॉट में ही सक्सेसफुल होंगे, but the more shots you take, the more you realize and you are able to fine tune your idea into a better point. मैं ये मतलब मेरा ये थिंकिंग है कि पहले दिन से डिसाइड कर लो यार कि आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, द काइंड ऑफ रिस्क एपेटाइट यू हैव। दीज आर टू मेजर डिफाइनिंग फैक्टर्स, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी लाइफस्टाइल डिफाइन होगी ये चॉइस से, और आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना चाहिए उसके लिए, सपोर्ट करने के लिए। आ, क्योंकि दीज आर बोथ ऑपोजिट। मतलब आप ऐसी चीजें इस धंधे में सीख लोगे ना, जो यहाँ आपको डिटर करेगी सक्सेस करने से, इट विल एक्चुअली पुल यू बैक। एंड अगर आप एक बार स्टार्टअप में घुस गए ना, फिर अगर आप धंधे में चले गए तो वहां लोगों की लाइफ हराम कर दोगे, बिकॉज यू डोंट लाइक दैट स्पीड, यू डोंट लाइक दैट एनीवे। वो एड्रेनलिन है इस साइड पे, अगर आप वो फास्ट पेस में जाना चाहते हो तो जाओ, वो F1 रेस में जा रहे हो आप। दूसरा, आप आराम से गाड़ी चलाओ ना यार, आपकी रास्ते है, आराम से चलो, जो करना है करो, सीनरी एंजॉय करो, एंड स्टिल मेक मनी। सहूलतें गुड मनी, मिलेगी, लाइक नाउ लग्जरी पीपल मिलेगी। मेक सो मच मनी, राइट? या हाँ, definitely. And see, in terms of success or society respect or anything, nothing, no other parameters matter. Because if you are good, तो आप यार अहमदाबाद में people are making 1,000 crore businesses, 25 year olds, right? और यहाँ बैंगलोर में वही चीज लोग मीम कॉइन ट्रेड करके कर रहे हैं, 25 year olds only. So both the options are open for you, but वो जितनी जल्दी डिसाइड करके फिर उस लेन में स्टिक रहे ना, तो फिर वो नॉलेज और प्रैक्टिस कंपाउंड होती है। अगर वो यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ किया, देन इट डजंट एक्चुअली कंपाउंड एज मच। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक वी सम इट अप वेरी वेल, एंड आई थिंक ये या बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा फॉर यंगस्टर्स। आई थिंक दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस पॉइंट really well, because I wish I had more friends in my surrounding, या फैमिली मेंबर्स हु कुड हैव एटलीस्ट बेसिक आइडिया कि ये दो पहलू अलग है, ये एक नहीं है। तो ये सोच, ये नजरिए की जंग है। तो आप कौन से नजरिए पर चल रहे हो, उस वो डिटरमाइन करता है कि आपकी जंग कैसी रहेगी। मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ के 5-7 साल वेस्ट कर दिए
धंधा माइंडसेट से स्टार्टअप ट्राई करने के लिए, राइट? बिकॉज आई डेंट नो कि ये रॉन्ग चीज है। मैं बेसिक बूटस्ट्रैप धंधा स्टाइल में अपना सैस प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, नहीं बनने वाला ये। यार ये मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आपने कहा मैंने वेस्ट कर दिए। नहीं, वो उससे जो आपको ग्रोथ मिला है इंटेलेक्चुअली, पर्सनली, इमोशनली, क्योंकि वो बैंडविड्थ, आई फील एवरी रॉन्ग स्टेप इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। वहीं से आपका ग्रोथ होता है। इफ यू जस्ट वॉक ऑन स्ट्रेट, यू डोंट एक्चुअली एंड अप लर्निंग मच। क्योंकि जितने भी लोग, इट्स वेरी पेनफुल, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि वो जब टाइम जाता है फ्रिक्शन वाला, इट्स नेवर अ प्लेजेंट टाइम। मेरी लाइफ में भी हुआ, आपकी लाइफ में भी रहेगा, हर किसी की लाइफ में वो बहुत ही अनप्लेजेंट टाइम। एंड व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू पुश इट अवे, कि वहां से बाहर निकलने के बाद फिर से नहीं जाना है मुझे वहां पर। बट मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं वो फ्रिक्शन मोड में आऊं। मुझे नहीं पसंद है, आई बेट यू, लाइक इट किल्स मी, इट पेन्स मी। बट मुझे ये पता है कि निखरूंगा मैं वहां से। जो निखार हम्म, आती है, चमक आती है, वो हम्म, वहीं से हम्म, मिलती है। हम्म। लाइक इट्स नहीं मतलब, इट्स लाइक, सॉरी, गो अहेड। हाँ, नहीं, ये भी एक अलग चीज है, दिस दिस थिंग। नाउ आई हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ माय माइंड ऑन। पहले मैं भी ये सोचता था कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और सब है, एडवांटेज है, मैंने सीखा बहुत कुछ। और डेफिनेटली लाइक इंटरनेट, ई कॉमर्स, 3-4 साइकिल देखने के बाद एक और साइकिल क्रिप्टो की देखो तो एडवांटेज होता है, फॉर श्योर। बट आई वुडेंट एनकरेज दैट थिंकिंग ऑल्सो। रिसेंटली, रिसेंटली नहीं, काफी टाइम पहले, आई थिंक पीटर थिल सेड दैट विनिंग इज गुड। मतलब आप जीतने की सोचो, ये मत सोचो कि हार गया तो लेसन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं लेसन लेके हम बेटर करेंगे, बट द एम शुड नेवर बी, यू शुड नेवर हैव दैट थॉट इन योर माइंड कि चलो ठीक है, हार गया तो लेसन तो मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला, भाई कबाल को उसको डेस्टिनी पे तो पहुंचाना ही पड़ेगा हमें। देर इज नो वे दैट वी से के नहीं किया एंड देन लेसन तो मिल गया, बिकॉज दैट्स व्हाट लॉट ऑफ अस आर टॉट टू से ऑल्सो। इंडियन कल्चर में भी ये सिखाते हैं कि ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। बट actually large winners, outlier winners, are not made by people who have learned lessons. They are made by people who have become so habituated to winning that it's second nature for them to just win, keep winning. हम्म। Right? इसको कैसे तो करना है, इसके भी तरीके ये हैं, बट ये आई थिंक आप मेरी रघु से बात हुई थी, एंड वी वर रिकॉर्डिंग टुगेदर, हमने 2 एपिसोड किए साथ में। और उनका भी फलसफा वही था जो आप कह रहे हो। तो मैंने, मेरा फलसफा तो आपने सुन लिया, तो मैंने वही कहा था। वो बोले, मैंने बोला कि उतनी तवज्जो जो चीज पर जाती है, वो तभी जाती है इफ यू हैव समथिंग। इट्स ह्यूमन इन बॉर्न नेचर टू नॉट वैल्यू इट। यू विल नॉट वैल्यू इट। तो जब तक होती नहीं है या मिलती नहीं है, तब तक उसकी समझ नहीं आती। तो मैं, हाँ, एंड आई डोंट डिसएग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, आई कंप्लीटली एग्री कि वो नजरिया है, राइट? वही नजरिए से ऑपरेट करना है। बट देर आर गोइंग टू बी रोड बम्प्स, फेलियर्स, एंड दोज फेलियर्स आर गोइंग टू हेल्प यू टीच समथिंग। नाउ द चैलेंज इज, आर यू ओपन इनफ टू पिक एंड लर्न द लेसन? क्योंकि कई लोग मिलेंगे वो वही की वही गलतियां बार बार वही कर रहे हैं, वो तो देन लेंगे ही प्रॉब्लम नहीं, इज योर्स। नहीं। दैट्स हाँ, नॉट वी हाँ, आर व्हाट वी आर रेफरिंग टू। नहीं, नहीं, यार अभी तो हम अज्यूम कर रहे हैं ये जनरेशन बहुत स्मार्ट हो गई है, इतना बेवकूफ़ी वाला काम तो नहीं करेंगे ना। इसको इसको लेसन को ही ना ले। आई थिंक मोस्ट वेब 3 फोक्स आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल टू नो कि ये मेरे बायस है इनहेरेंट, इसको मैं हटा देता हूँ एंड ग्रो वेरी वेरी फास्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। और उम्मीद यही है कि हर जनरेशन आगे वाली जनरेशन से मोर एफिशिएंट होती है, मोर अवेयर रहती है, तो उनको एक लेग अप मिलता है। और वो होता ही आया है और वो होता रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो परिन, यहां से हम सेगवे करते हैं। આપણે જઈએ અમદાવાદમાં। તમે અમદાવાદમાં શું કામ કરી રહ્યા છો એ સમજાવો હવે। ओह, बाप रे, गुजराती हुआ પહેલા પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન। હું ગુજરાતી છું, इंट्रोडक्शन। પરીનભાઈ પણ ગુજરાતી છે।
તો એ પોસિબલ નથી કે ગુજરાતીમાં વાત ના કરી. અમે વાત કરી હતી ગુજરાત માટે મોડલ માટે શું કરી શકીએ છીએ. તો ઇટ્સ ઓપન ફોરમ, રાઈટ? વી આર બે ટોકિંગ કલાક લાઈક હજી વી કેન. ડિસ્કશન કરવું પડશે આપણે આના માટે. અરે આપણે આપણે કોશિશ તો કરીએ કે શું કરી રહ્યા છે આપણે. તમે શું કરી રહ્યા હા, છો અમદાવાદમાં? વોટ ઇઝ યોર આઈડિયા? તમારો એમ શું છે? શું શું અચીવ કરવા માંગીએ છીએ આપણે ગુજરાત માટે? તો યાર બેઝિકલી મેં જોયું માઇન્ડસેટ ચેન્જ જે આપણે વાત કરીએ ને, રેલ હમ વર્સિસ ગાડી બનાવો, તમે કાંઈ પણ બનાવો. અ, આ માઇન્ડસેટ જ્યારે હું સેન ફ્રાન્સિસ્કોમાં ગયો, વિચ વોઝ વેરી લેટ ઇન લાઈફ, જે 2 વર્ષ પહેલા હું ગયો ત્યાં ફર્સ્ટ ટાઈમ. એન્ડ આઈ એન્ડેડ અપ મીટિંગ સમવન રિયલી બિગ, જે હમ ફેસબુકના બોર્ડ પર છે ને એવી રીતના. હમ એન્ડ ધીસ ગાય સેડ, શું કરે છે આ તે, અને અમે બિલ્ડર સ્ટેપ બનાવતા હતા ત્યારે. તો હું કીધું બેંગ્લોર જો, વી આર ગોઈંગ ટુ કિલ ઇટ એન્ડ સ્ટફ. તો એમને મને કીધું કે કેમ બેંગ્લોર પર આટલું બુલિશ છે તું? મેં કીધું કે હું બોલીશ છું કેમ કે ત્યાં જો લાખો આટલા સ્માર્ટ ટેકીસ છે ને કે એ લોકો કાંઈ પણ ટેક બનાવી શકે. એન્ડ હી ટોલ્ડ મી ધીસ સ્ટેટમેન્ટ કે સિલિકોન વેલી ઇઝ નોટ વેર મોસ્ટ નંબર ઓફ developers are or techies are. Silicon Valley is where most number of risk takers are. તો ત્યારે તો મને કઈ ઠીક છે વાત ભરાઈ ગઈ મગજમાં, બટ આઈ ડિન્ટ પે અટેન્શન ટુ ઇટ. આફ્ટર અ યર ઓર સો બિલ્ડર્સ ટાઈપ પણ જ્યારે આઈ વોઝ ડુઈંગ, ઇટ કેપ્ટ કમિંગ બેક ટુ મી. હમ બેંગ્લોરમાં અમે ઓફિસ બનાવી, બેંગ્લોરમાં ઓફિસ બનાવવાનું બહુ હાર્ડ કામ છે, કેમ કે કાર્પેન્ટર આવશે, 2 કલાક મેજરમેન્ટ લેશે, પછી કહેશે હું કાલે આવું છું. આપણે અહીંયા મુંબઈમાં કે ગુજરાતમાં બનાવો ને તો 2 કલાકમાં આખું ટેબલ બનીને ઝાડુ કાઢીને વયો ગયો એનો, બરાબર, અને પૈસા ડબલ લઈને જાય પણ કામ સારું કરીને જાય. બેંગ્લોર વાળા એ કાંઈ નહીં કરી શકે. ધીસ ઇઝ વેરી પોલિટિકલી ઇનકરેક્ટ, નોટ ટુ સે કલ્ચરલી certain things have been very easy. હમ રિસ્ક ટેકિંગ, મુંબઈ દિલ્હીમાંથી સૌથી વધારે સ્ટાર્ટઅપ આવ્યા છે યુનિકોર્ન્સ ઇન્ડિયામાં. કેમ? હમ બિકોઝ આ દિલ્હીમાં કલ્ચર છે, ઘણી બધી મેટ્રો સિટીઝમાં ઘણી બધી અલગ જગ્યા પર કલ્ચર છે. હમ બેંગ્લોરમાં પણ છે રિસ્ક ટેકિંગ કલ્ચર, બટ ઇટ્સ નોટ ઇનહેરન્ટ કલ્ચર. આ બનાવેલું વીસી ફંડેડ કલ્ચર. આઈ કીપ સેઇંગ હમ મુંબઈ ઇઝ બૂટસ્ટ્રેપ, બેંગ્લોર ઇઝ વીસી ફંડેડ. મુંબઈ આ હમ બધી ચીજો હાર્ડ રીતે શીખી. હમ તો I kept thinking about it, and Mumbai ecosystem last year I tried કરી હતું, but it seems like the rent is too high for young people to come in, which is a deterrent હમ to create such an હમ. ecosystem. આવી ecosystem ના બની શકે if that city's rent initially becomes very high. Like later on, it picks up when It's a people have bigger barrier. IPO'd and stuff. Yeah, yeah. So initial stage માં આપણે ના ચાલુ કરી શકાય. And then I just realized કે યાર I always thought કે આપણે bias ન હોવું જોઈએ ગુજરાતી તરફ. આપણે કેમ, just because I'm a Gujarati, I should not say let's do this in Gujarat and stuff. But then I just realized that maybe it's value alignment or it's something that I can understand that this is the right place to do it. ભાઈ છે ચીજ. કબાલ, ભાઈ કબાલ, ભાઈ કબાલ, સેમ પ્રિન્સિપલ્સ. હા, સેમ બધી કમ્યુનિટીમાં સેમ પ્રોબ્લેમ આવવાનો જ છે બધાને, અને બધા this will happen, but this is, I'm glad Elon Musk is solving for this in some way by changing the narrative. uh, હમ 8 billion people are not going to be one community at any point of time. Everyone is good at something, right? If I was starting a poetry residency, I would be stupid not to do it in Bengal, right? That's હમ. what I'm saying. It may be a stereotype, but that's also culturally true, મોર to અલાઇન્ડ, a કલ્ચરલી statistical મોર level અલાઇન્ડ. in some way. હા, અને એ Yeah, સ્ટેટિસ્ટિક્સ it એટલા is, it માટે is. છે કારણ કે So, કલ્ચરલી અલાઇન્ડ છે. exactly. So I was like, ચાલો યાર ટ્રાય કરીએ. સો આઈ વોઝ જસ્ટ પ્રિપેરિંગ સમ આઈડિયાઝ, આ બધું કર્યું, એન્ડ આઈ મેસેજ જેડીભાઈ, જયંતિ કનાની, હુઝ co-founder of Polygon, હમ કે આવું છે. તો હી ઇઝ લાઈક વોલેટ એડ્રેસ મોકલ. વાહ, આપણે કાંઈ વાત કરીએ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ટુ બી ડન, વોલેટ એડ્રેસ મોકલ, યુ ડુ ઇટ. And I was like, okay, wow. And then eventually it became such a massive failure for every possible reason. Uh, કે that journey actually made me more convinced that Ahmedabad is the place to become real Silicon Valley of India someday, maybe in 5 years, 10 years. But also, મને જાણવા મળ્યું that it is not ready right now for a founder house. Founder house, like a physical property, it's not ready.
yet. mm, Maybe 1 or 2 more years of effort, background effort, to create that community, have that core 30, 50 members who are so good that people can actually learn. They can create the culture that can be passed down. Uh, mm, VC startup culture, not mm, bootstrap startup culture. mm, So I tried to do that house. I had like a ton of money from JD. Uh, didn't work out to the extent કે core team જ નથી ત્યાં આગળ જે really આ કરવા માંગે છે. Like mm, everyone is looking for, I will visit the place if you create it. But mm, then who really creates it? Like someone અમદાવાદી જોઈએ આપણને જે કોઈ અમદાવાદી ભાઈ આવીને કહે કે હું આ કરીશ બોલો જવાબદારી લઉં છું પૈસા છે આપણી પાસે કોન્ટેક્ટ છે બધી ચીજો છે ઓલ રિસોર્સિસ આવે બટ ઓપરેશનલી એને કોણ એક્ઝિક્યુટ કરે I couldn't find anyone. Like અત્યારના mm, બેંગ્લોરમાં કરવું હોય તો I will find like 15 people in a second. બટ અમદાવાદમાં ના mm, મળે ફ્રેન્કલી. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ કલ્ચર થોડું કન્ઝર્વેટિવ છે અમદાવાદમાં તો mm, એક ઘરમાં 10 લોકો રહીને શું કરે છે બેચલર્સ આ એક mm, પ્રોબ્લેમ છે which I mm, never could have thought in my whole life and I don't know mm, મેં એટલીસ્ટ 10 લોકો સાથે પહેલા વાત કરી હતી કે મારો આવો પ્લાન છે તો મેં વેલિડેટ કરો પહેલા આને mm, નો વન ટોલ્ડ મી કે ભાઈ અહીંયા 10 લોકોને એક રૂમમાં એઝ બેચલર્સ રાખવું ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ યોર લાઈફ વિલ બી હેલ mm, દેટ ઇઝ વોટ ટર્ન્ડ આઉટ ટુ બી ઘર મળ્યા બજેટ મળ્યું બધું ગમ્યું બધું પછી લેન્ડલોર્ડ કે ના ના અમે તો ફેમિલીને જ આપીએ અગર આવી રીતના થશે લેટ્સ સે નાઉ mm, ઇમેજિન કે આપણે એક સોલાના હેકેથોન ત્યાં કરાવીએ મોટો અને અગર mm, 500 લોકોને આવવું હોય બીજી સિટીઝથી બાજુમાંથી રાજસ્થાનથી મુંબઈથી બધેથી વેર વિલ દે લીવ there are hardly mm, any Airbnbs there. સિટીની અંદર mm. Airbnb નથી આખી સિટીની અંદર. So it turned out to be a very, very different thing in some way. હું તને વચ્ચે એ કહેવા માંગતો હતો કે આ જે ચેલેન્જીસ છે ને એટલે નોટ બીકોઝ હું બરોડાનો છું પણ મને એવું લાગે છે કે આ ચેલેન્જીસ બરોડામાં કલ્ચરલી અલાઇન વધારે છે Hmm. રાઈટ Hmm. Hmm. બીજું અમદાવાદ કરતા ચીપર છે Hmm. નંબર 1 નંબર 2 કલ્ચરલી અલાઇન વધારે છે આપણા આઈડિયાઝ માટે વેબ3 માટે અને નંબર 3 વાયેબલ એટલા માટે છે કે કોઈ પણ ખૂણામાંથી એક ખૂણામાંથી બીજા ખૂણામાં જવું હોય ને 20 થી 25 મિનિટમાં આખું આમથી આમ યુ કેન ટ્રાવેલ પ્લસ યુ હેવ ગોટ એરલાઇન Hmm. કનેક્ટિવિટી ફ્રોમ મેજર સિટીઝ એટલે આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ પુટ ઇટ આઉટ સેઇંગ દેટ લાઈક ઇટ માઇટ બી લેસ ફ્રિક્શન કન્સિડરિંગ દેટ ઓપ્શન અને કલ્ચરલી વધારે That લાઈન મળશે તને I didn't start. I didn't start it thinking all of these things. આ બધા constraints છે. અને હમ, બરોડામાં ચાલે છે બાય ધ વે આઈ હેવ ટુ સે લાઈક સોલાનાવાળાએ શિપયાર્ડ ચાલુ કર્યું છે હમણાં ત્યાં આગળ હમ, અને ઘણા લોકો ઓલરેડી ઘણી બધી ચીજો કરે છે સો દેટ્સ ઓલવેઝ ગુડ અને 100% કોમ્પ્લિમેન્ટરી મારો આઈડિયા છે યાર કે વી નીડ પાવર હાઉસ ઓફ મની હમ, હમ, વી ઓલ્સો નીડ પાવર હાઉસ ઓફ thinking talents. So હમ, we need places like IIM Ahmedabad, NID. We need હમ, places like, let's say, DAICT or હમ, NIRMA. Some things, this is whole infra that comes together. હમ, Right? હમ, You cannot have Silicon Valley without Stanford. So હમ, maybe, IIT Gandhinagar seems like the Stanford. હમ, I'm not sure. More early, but you હમ, need that continuous tech talent and that culture. હમ, આ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં કોઈને જોબ કરવો જ નથી હમ, ક્યાં બનાવશું આ બધી ચીજો એન્ડ હમ, દેન યુ નીડ complementary mindset in terms of business. You need હમ, complementary mindset in terms of design. You need complementary mindset in terms of arts. કેમ કે બધી આ બધી ચીજ આવે છે સ્ટેનફર્ડ છે બર્કલી છે કેલિફોર્નિયા કલ્ચર છે ઘણી બધી ચીજો છે that comes together to make something like this. So a lot of people told me કે બરોડા કરી જ લ્યો. My thinking is let's see at least બરોડા હોય કે અમદાવાદ હોય કે ક્યાંય પણ હોય that job is like 10-15 year no job છે તો હમ, એટલીસ્ટ લેટ સ્ટાર્ટ ક્રિએટિંગ એન્જિનિયરિંગમાં સ્ટાર્ટઅપ કલ્ચર થોડુંક હમ, જ્યાં લોકોને હમ, જોબ જોઈએ જ નહીં એ લોકોને નથી હમ, જોતી જોબ એ લોકો સેકન્ડ યરથી એપ બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે સો હમ. લેટ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ દેટ તો જ્યારે એ લોકો ગ્રેજ્યુએટ થશે ને તો ગ્રેજ્યુએટ પછી એ લોકો જોબ નહીં જોવે દે વિલ બી એ કોન્ફિડન્ટ ઇનફ ટુ નો કે હું મારું એપ બનાવીશ ને આઈ વિલ મેક સમ મની આઉટ ઓફ ઇટ
એન્ડ હમ, ધેર પેરેન્ટ્સ વિલ બી ઓકે વિથ ધીસ થિંગ્સ. તો હમ, આઈટી ગાંધીનગરમાં એક આ ઇનિશિયેટિવ ચાલુ કર્યો છે. હમ, ત્યાં અમે ડિક્લેર કર્યું હતું જઈને ફાઉન્ડર હાઉસ ટીમ સાથે કે અ, એક કોઈકને ફંડિંગ વિધિન 1 યર બેઝિક, અને 2 જણને 100K ની જોબ વિધિન 1 યર. ધીસ ઇઝ ધ હમ, એમ ઓફ ફાઉન્ડર હાઉસ ઇન આઈઆઈટી ગાંધીનગર, કે આપણે આ કરાવશું હમ, કેમ પણ કરીને કરાવશું. એન્ડ આઈ થિંક વી ઓલરેડી ગોટ 3 પીપલ સમ ઇન્ટર્નશિપ્સ એન્ડ સ્ટફ. ચાલુ થઈ ગયું છે હમ, બધું એની અંદર. હમ, તો આ એકદમ હજી આપણે તણખો લગાડીએ છીએ. આ બહુ જ દૂરની વાત છે પ્રોબેબલી, કેમ હમ, કે પાછું આ બધું દિવાળી હમણાં બુલ માર્કેટ છે, બધું થાય છે, પછી બધું બંધ થઈ જશે. તો સસ્ટેનેબલી કરવું છે, પ્રોપર સસ્ટેનેબલી કરવું છે. અત્યારના મેં આઈ હેવ ગિવન ધ મની બેક ટુ જેડી ઓલ્સો. આઈ ડોન્ટ હેવ એનીથિંગ. લાઈક હું અત્યારના બેકગ્રાઉન્ડ વર્ક કરું છું. વર્ષ બે હમ, વર્ષ સુધી મારે બસ આ એક ટેક ટેલેન્ટનું પૂલ બનાવી દઉં છું ત્યાં આગળ. એન્ડ હમ. દેન સ્લોલી ડ્રાઈવ ધેમ ટુવર્ડ્સ કે યાર તું અગર એપ બનાવીશ તો તને આપણે ફંડિંગ અપાવી દઈશું. સો એટલીસ્ટ યુ આર નોટ રિસ્કિંગ એનીથિંગ. I'm Basic, giving my job basic, offer, but I'm not doing this. basic. What you are doing is so powerful, Parin, કારણ કે જે બેઝિક નો ચેલેન્જ છે ને એ જો ફૂલફિલ થઈ જાય ને તો એ જે મોટો ટ્રેપ છે ને 10 વર્ષનો 15 વર્ષનો પછી એમાંથી બહાર નીકળતા હા 10-15 વર્ષ લિટરલી. થઈ જાય છે. કારણ કે એ પેલાને શું થાય છે કે મને 50,000ની નોકરી મળે છે કે લાખ રૂપિયાનો, તો એ ચક્કરમાં એ 15 વર્ષ જતા રહે અને એમાં પણ સમજ આવે તો, નહીં તો ગયા એ પછી 40 વર્ષ એ સાયકલમાં જ જાય છે. તો આઈ થિંક આ આ એક્ઝેક્ટલી. જે આઈ અને મારું ડોન્ટ નો, મારું એમ, હા સોરી ગો એહેડ. મને એ નથી ખબર કે હું શું કરી શકીશ, પણ હું કંઈ પણ કરવા માટે રેડી છું. તું મને ખાલી કે આ કરવું છે, આઈ થિંક યુ કેન ડુ ઇટ, ઓર આઈ નો યુ ડુ ઇટ, સેડ એન્ડ ડન. એ પછી મારી જવાબદારી છે મારી હું પાસે કેવી આઈડિયા રીતે છે કરું. એક. હવે હું અત્યારના રેકોર્ડિંગ પર કહી દઉં. તમે કમિટમેન્ટ આપી દીધું તો પછી આપણે કરી નાખીએ. કહી દે, હા, કહી દે, કહી દે. કે આપણે પોલગ્રામનું બધું નોલેજ ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરી નાખ્યું. હમ. વિડીયો ડન, ટ્યુટોરિયલ. ડન, ડન, ડન. કેમ કે આ બેઝિક અને ચીજો નો વન ઇઝ વોચિંગ. ઇટ્સ દેર ઇન ઇંગ્લિશ, અને આઈ નો બધા ઇંગ્લિશ વાંચી શકે છે, બટ કોઈ કરતું નથી. થોડું આપણે ફન એલિમેન્ટ લાવીને ગુજરાતીમાં નાખી દઈશું ને તો આપણે 14-15 વર્ષના છોકરાઓમાં મગજમાં ઘુસાડી દેશે. Seeding that in their ડન mind is awesome. યાર પછી no જે one can stop them from becoming founders. અને એ આ જે આઈડિએશન છે, આ જે આઈડિએશન નેટવર્ક ઇફેક્ટ, જે હ્યુમન કોર્ડિનેશનની ચેલેન્જ છે, રાઈટ? આઈ હમ. આઈ એમ શ્યોર યુ માઇટ હેવ રેડ સેપિયન, રાઈટ? તો ઇટ ઇઝ સો હા પાવરફુલ. હા હા. એટલે એ આઈ આઈ કેન રિલેટ ટુ ધોઝ થિંગ્સ વેરી સ્ટ્રોંગલી. અને વી આર નોટ, એટલે આપણે કંઈ છુપાઈને કે આપણે કંઈ પ્રોપોગન્ડા નથી કરવાનું. વી આર એકચ્યુઅલી ટ્રાઇંગ ટુ બિલ્ડ મોડર્ન ઇન્ડિયા. એઝ યુ રાઇટલી સે, એ હા, રાતોરાત નથી થવાનું. એના માટે આપણે 20 વર્ષની મહેનત પ્રોપોગેન્ડા છે. જ કરીએ. ઇટ્સ નહીં, અ હું શું કહું છું, આપણે પ્રોપોગેન્ડા જ કરીએ, બટ ઇટ્સ ફોર ધ ગુડ ઓફ ધ સોસાયટી, રાઈટ? કે યાર આપણે ઇન્ડિયામાંથી ફેસબુક એક તો બનાવવું છે ને યાર. કેમ નથી બન્યું આપણું? આઈ ડોન્ટ નો બનવું જ કેમ જોઈએ. નથી બન્યું. 100% બનવું જોઈએ. હા. તો એ એ વાત આપણે હાઉ ટુ ડુ એન્ડ વોટ ટુ ડુ, યુ ગોટ માય કમિટમેન્ટ, વિલ ડુ સમથિંગ. એ પાક્કું છે. બરાબર છે. એટલે એનો આપણે પ્લાન વર્કઆઉટ કરી લઈશું પછી આ વાત કર્યા પછી. હવે મને એ જાણવું છે કે ટેન્જિબલ, રાઈટ? એન્ડ ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ લાસ્ટ સેગમેન્ટ. 3 થિંગ્સ મિનિમમ, એટલે જે એના કહીએ ને આપણે કે બેઝિક, આપણો ગોલ શું છે આવતા 12 મહિના માટે ગુજરાતમાં. બસ આ જ છે યાર. મારા ખ્યાલથી એટલીસ્ટ 3 થી 4 લોકોને 100K ની જોબ અપાવી છે. દેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. મે બી 6-1 મહિનામાં I'm sure we will get more sponsorship offers. Okay, I can talk to JD again or something. There is a possibility that we can at least have 2 or 3 people. 2-3 લોકો કોઈ એવા આવે જે કે ના મને કરવું છે, I want to do this. And we can હમ, start in a small way with them also. હમ, That's one, I think, uh, side, team building side. And the second side is where we have outcomes. કે એટલીસ્ટ હમ, 3-4 લોકોને આપણે 100K ની જોબ અપાવી છે, એન્જિનિયર્સને. અને એક એક ફાઉન્ડરની ફંડિંગ તો કરાવવી પડશે, કોઈ પણ જે હમ, પણ હોય એની, ઇન હમ, સમ વે. So how to do હમ, that? These are tangible targets. Intangible targets would be actually
to drive this narrative, right? મારું community building કે આ બધી ચીજ બનાવવાનો approach is not to run the whole thing all the હમ time, right? હમ Is to say એકવાર આપણે narrative create કરશું ને તો એનું ripple effect એવું જ હશે ને that only we will understand કે આપણે હમ આ ripple effect create કર્યું છે એટલે સામેવાળાને ખબર પણ નથી કે મને આઈડિયા ક્યાંથી આવ્યો, right? So we have હમ to create that. So PR કરવું પડશે ન્યૂઝપેપરમાં, આ બધા આઈડિયાઝ પ્રોપોગેટ કરવા પડશે કે હમ યુ નો VCs ને હેટ નહીં કરો તમે, ઈ ગેમ ખોટી નથી, એનો પર્સપેક્ટિવ શું છે આપણું, પ્રોપર ટૂલ છે યાર રેગ્યુલેટેડ એક તરીકેથી બધું થાય છે. હા, હા ટૂલ અને છે, એક ફંડિંગ એક મિકેનિઝમ વીસી છે એક યાર. હા એક વીસી નું ટૂલ છે, આઈસીઓ ટૂલ છે, પબ્લિક ક્રાઉડ ફંડિંગ ટૂલ છે. તમને કયું ટૂલ વાપરવું છે અને તમારી જરૂરિયાત શું છે એ ડિટરમાઇન કરશે કે તમે કયા ટૂલ પાસે જશો. તો તમારી એક્ઝેક્ટલી. આ now on our last and final note, three things you want to tell to young kids passing out કોલેજમાં છે, ભણી રહ્યા છે. What are the three basic mindsets they need to enter into Web3? કોઈ પણ કરી શકે છે પણ સક્સેસફુલ થાવ બટ ધેર પોસિબિલિટી વધારવા માટે. So, see, Web3 ma, for some time in the near future also, money is going to be taken for granted. You will make money. There is no chance that if you are hardworking and smart, કે તમે પૈસા ના બનાવો, and you don't make money, right? There is no way. હમ, Uh, where people go wrong is they try to make all of it in one go, right? હમ, They say generational wealth, wow, wow, this, that, everything. All those buzzwords come in, right? Uh, that is where everyone fumbles. That is where everyone goes wrong by saying કે મને બસ મારા બધા મિલિયન હમણાં જ બનાવવાના છે. Uh, that will lead to very bad outcome, very, very bad outcome for sure. So aim to make money. It's awesome. You are here for that. None of us are here for charity eventually, but હમ, uh, the way to do it is to say, "Yaar, I'm making so much more than what the two guys are making. My friends outside the industry are making. Now let's learn how to compound this." Uh, Generational wealth બનાવવાના ચક્કરમાં either speculation માં લોકો ડુબાવી દે, or they will end up doing something that's not quite uh, ethically right, right? And integrity, second thing is the most important in this industry, right? કેમ કે આપણે ટ્રસ્ટલેસની વાતો કરી છે. We are talking about trustless, but everything runs on trust here, right? VC is based in one jurisdiction, founders based in another jurisdiction, companies in another jurisdiction. Everything is happening, right? Tokens are being traded. It's not trustless at all. In fact, it હમ, is 100% based on trust. That's why there are હમ, no brands in Web3. There are only people in Web3. So you have to make sure that as a person, you get to go to the next high stakes table. Next high હમ, stakes table, how do you go? Is uh, by being known as at least a person with integrity who will not cheat anyone. Failure is okay, and failure is very highly accepted also. But હમ, uh, just cheating someone for uh, short-term gain, even if it is generational wealth, it's not going to last very well, and it might હમ. sound like a moral thing, but it's just very practical what I see every day. Okay, this guy has so much potential, but by doing some stupid thing, right? So high stakes table ઉપર trustworthy લોકો જઈ શકે. No one else can હમ, do that. It's not possible to reach that high stakes table, even though you might have money. હમ, The way to get there is with trust. Uh, Third thing, if I were to say, it's very hard to do three. Yeah. I don't know what are the most important thing. But third thing that I would say, I've in some way learned also is that it's important to create that grounding here. The reason why I live in Ahmedabad now and not in Bangalore is because I want to create my own tribe where I'm rooted enough. It's very easy to fly in this industry, right? When હમ, prices are going up, people will be like dopamine rush things, and it will be like literally charts are giving you dopamine hits, right? And every day for months. Now, when that હમ, happens, you need something to keep you tied to the reality. That okay, real life still exists, and it is there. People are still making.
4% on FDs and stuff like that. And not just financial reality, but everything else. Mm, That I found that it's very hard to do mm, with people who are not your tribe. Means that they will really care for you before their own interests in some mm, way, right? mm, So that creation of that tribe is super important. If you don't have that, creating that will save you from so many pitfalls that it's not even funny. Hanging out, going to events with 500 people, everyone is my friend, everyone is my Twitter friend. That's that's complete. Don't believe in all these things. Uh, the whole world is not family and stuff. You need that core people who will not you over, even if it is in their uh, Interest. profitable interest to do that. Yeah, Yeah. uh, then we can sleep calmly and we can understand that, okay, at least I'm not making very silly mistakes because we end up doing. This industry is prone to making very silly mistakes like trusting FTX or GSE and believing that, all of these things could be even possible. So Mm, grounding is super important. At in 20s, I would have just taken off, without any anchor. You don't want that. Go to the mm. moon, but be anchored to the ground અરે Parin, so you what can you at least said. come back. પેલું ઓર્બિટમાં ખોઈને જ જવું કે હવે પાછું કેવી રીતે જવું એ જ નથી ખબર. Exactly. See, so what's your navigation tool, right? There is no truth right now, right? What is the truth? There is hardly any truth in our industry. Forget about it. Like doctors don't know what the truth. Forget about our industry. We are dealing in meme coin. So how tells you the truth? It's your friend who will be like, "अबे चुप बकवास कर रहा तू." Who are those people who will tell you that you are doing something crazy? Don't do this, right? I think that's super important. And advisors are everywhere. Well-wishers, friends are everywhere. No, they are not your community, not your friends. So those 5, 10 people, you got to really figure out how to have them. વેરી વેલ સેડ Parin. મને છે ને કોઈએ બહુ પહેલા કીધેલું મારા નાનીએ કે જો તને બેટા પૂછવું પડે ને કે આ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ તો તને આન્સર ખબર છે કે ના કરવું જોઈએ. Yeah, see, એમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે આ બુલ માર્કેટમાં છે ને આપણે પૂછ્યા વગર એવી ચીજો કરશો ને જે ના કરવી જોઈએ. એ કહેવા વાળું કોણ છે કે આ નથી કરવી જોઈએ વગર પૂછ્યા. ના ના and you're so right, and to wrap this amazing point on, મોટા ટેબલ પર જે રીતે પરીને કીધું ને કે ઉપરના સ્ટેક પર જવું છે તો એક જ આઈડિયા છે જે આપણે બધાને ખબર છે. 2020 રમવું હશે તો રમશો, મજા પણ આવશે, પૈસા પણ કમાશો, પણ ટેસ્ટમાં નહીં ચાલો. તો ઇફ યુ આર હમ ઇન લોંગ ટર્મ, દેટ ઇઝ વાય. કારણ કે એ બધી જ જે પરીને સ્કિલ્સની વાત કરી, કે જે ફિલોસોફીની વાત કરી, કે જે વેલ્યુઝની વાત કરી, બરાબર છે, આઈ સ્ટ્રોંગલી એસોસિએટ વિથ ટેસ્ટ મેચ. તમારે રેઝિલિયન્સ જોઈશે, તમારે પેશન્સ જોઈશે, યા તમારે ફોકસ જોઈશે. કારણ કે એ તમને શીખવાડે છે કે ભાઈ હું ટકીશ કેવી રીતે પહેલા. અને ટકવા માટે જે ક્રેડિબિલિટી 100%. છે, જે વેલ્યુ છે, તમારી ડિસિપ્લિન છે, ફોકસ છે, એ યુનિવર્સલ છે. એ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ છીએ, પણ વેબ3 ઇઝ નો ડિફરન્ટ, ઓર એની અધર ફિલ્ડ ઇઝ નો ડિફરન્ટ. યુ વોન્ટ ટુ હમ ગો ફાસ્ટ, યુ ગો યોર સેલ્ફ. યુ વોન્ટ ટુ ગો લોંગ, યુ ગો વિથ એવરીવન. 100%. 100%. તો પરીન, બે વસ્તુ. હાઉ વોઝ યોર એક્સપિરિયન્સ વિથ ડિજિટલ દુનિયા ગુજરાતીમાં? ઓસમ યાર, ગુજરાતીમાં કેમ નથી પોડકાસ્ટ? હા. ગુજરાતીમાં પોડકાસ્ટ કેમ નથી? This is awesome. It's needed. Uh, but like, I try to do કે ભાઈ, like, lucky for us, આપણે વેબ3 માં આપણી પાસે કેટલા અલગ અલગ સ્ટેટ્સ થી લેંગ્વેજીસ સ્પીકિંગ લોકો આવે છે. તો મેં હમણાં શું સ્ટાર્ટ કર્યું છે કે આઈ વોઝ નોટ ડુઈંગ એની શાઉટ આઉટ, રાઈટ, આઈ વોઝ નોટ આસ્કિંગ ફોર ઇટ. પણ મને એઝ અ ફન ફેક્ટર આવ્યું કે ભાઈ તમારી જે લેંગ્વેજ છે એમાં તમે તમારો એક્સપિરિયન્સ કહો અને ગીવ અસ અ શાઉટ આઉટ. એટલે I'll continue with that as we wrap up this journey with you.
ડેફિનેટલી. તો ગુજરાતીમાં શાઉટ આઉટ આપું તમને. હા. આઈ ડોન્ટ નો યાર શું ડિજિટલ દુનિયા. ડિજિટલ દુનિયા, 3 ક્વેશ્ચન આપું છું તમને, શેટ એટલે આમ એના નોટ આન્સર જ આપવાના હતા. ડિજિટલ દુનિયા પર આવીને તમને કેવું લાગ્યું? ડિજિટલ દુનિયા કેમ જોવું જોઈએ? અને અ, તમારો એક્સપિરિયન્સ ડિજિટલ દુનિયા પર શું હતો, જે વિચ ઇઝ પ્રીટી મચ સિમિલર ટુ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. પરફેક્ટ પરફેક્ટ. યાર બહુ જ મજા આવી ડિજિટલ દુનિયા પર આવીને ગુજરાતીમાં વાત. આઈ ડોન્ટ થિંક ક્યારે આપણે આવી રીતના ઓનલાઈન વધારે કરતા હોય, બહુ ઓછું જ કરતા હોય. અ, જે તમે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા એ બહુ જ ઊંડા છે. આઈ થિંક ધ ડેપ્થ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અ, અને ડિજિટલ દુનિયા માટે આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે દેટ પીપલ કેન લર્ન આટલું ડીપ ચીજો માટે. અને યાર ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ તો બહુ જ મજા આવી. આઈ થિંક આની અંદર જે વાતો ડિસ્કસ થઈ છે એ ક્યાંય મેં નથી કરી હજી સુધી આટલી રીતે. બિકોઝ આટલું ફ્રેન્કલી કોઈ ક્વેશ્ચન પણ નથી પૂછ્યા જે તમે જેવી રીતના પૂછાય છે. ઇટ્સ વેરી હાર્ડકોર અને ક્લિયર છે. રોઝી પિક્ચર નથી આની અંદર. જે સાચી વાત છે એ ક્લિયર છે. તો કોંગ્રેટ્સ ટુ યુ યાર ફોર સ્ટાર્ટિંગ ધીસ. આઈ એમ શ્યોર આ હવે રોકેટ થશે. પેલું કે છે ને કે મને પહેલા તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર કાઇન્ડ વર્ડ્સ. આઈ ટેક વેરી સિરિયસલી વોટ આઈ એમ ડુઈંગ. મારા માટે આ ઇટ્સ લાઈક ઇટ્સ પેશન તો છે, પણ ઇટ્સ વેરી પ્યોર એન્ડ પાયસ ટુ મી વોટ આઈ એમ ડુઈંગ. અને બહુ જરૂરત છે એની, મને એવું લાગતું હતું, એટલા માટે મેં કર્યું. અને પેલું કહેવત છે ને કે પેલું પ્રાઇસ પંપ ને ડમ્પ ને એટલા વ્યૂઝ આવે છે, એટલા ફોલોઈંગ આવે છે, ફાસ્ટ ગ્રો થાય છે, પણ હું પણ છે ને થોડો ઢીઠ છું. એટલે કે ભાઈ મારે તો આ જ કરવું છે, હું આ જ રીતે કરવું છે, બિકોઝ આ વેલ્યુએબલ છે અને આ રિલેટેબલ રહેશે 10 વર્ષ પછી પણ. કોઈ બીજા માટે, કોઈ બીજા ટોપિક પર પણ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી રિલેટેબલ. આવો મારો અભિપ્રાય છે. આઈ કુડ બી રોંગ, બટ દેટ્સ હાઉ આઈ સી એન્ડ દેટ્સ હાઉ આઈ થિંક. તો બહુ આનંદ થયો તમારી જોડે વાત કરીને. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર ટાઈમ, પરીન. સેમ યાર. ના બસ મજા આવી યાર આ કરીને. થેન્ક યુ. दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये एपिसोड में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा. मुझे बहुत मजा आई परीन से बात करके, और ये फलसफा जो उन्होंने शेयर किया है वो काबिले तारीफ है. और इसके अंदर बहुत सारी गहराइयाँ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो नजरिए के बारे में बताती है. तो आपका नजरिया तय करेगा आपकी जर्नी कैसी रहेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में. अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया. नमस्कार.